Very good morning to all of you. So here comes, welcome back again. Bsc Saoner Bsc online classes for the semester 3 and myself Mr. C.T. Potode, Assistant Professor, Department of Botany, Bsc Saoner. So dear students, we are going to discuss the semester 3 paper 1. Semester 3 paper 1, that is the Angiosperm taxonomy we are going to discuss. And this Angiosperm taxonomy, the first unit of the Angiosperm taxonomy, the second unit of the Angiosperm taxonomy, which consists of the classification of Angiosperms. For your kind information, I just revised this point which are involved in the unit 2 of the paper 1. The paper 1 unit 2 of semester 3, it consists of the classification of angiosperm. इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं classification of angiosperm से related. ठीक है? You all are aware about the angiosperms, that angiosperms are nothing but the flowering plants. ये flowering plants होते हैं. The varieties of flowering plants are present on our earth. ठीक है? हमारे अर्थ सरफेस पे varieties of flowering plants present है और उन flowering plants को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म या फिर अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो किया गया था. उन्हीं सिस्टम्स के बारे में हम लोग यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं. The unit 2 of paper 1 semester 3 consists of the classification of angiosperms, and this classification having the three main systems or the three main types. The three main types of classification of angiosperm, that is a natural system of classification, then artificial system of classification, and the third one, that is the phylogenetic system of classification. Then the systems of classification which was proposed by the famous scientists in the world of classification of angiosperms, that is Bentham and Hooker. These are the names of scientists who proposed the specific type of classification related to the angiosperm. Second type of system of classification which was proposed by the scientists Engler and Prandtl. These are the two famous scientists again, that is Engler and Prandtl. And on the basis of the names of these scientists, these systems of classifications are present. That is the Bentham and Hooker system of classification for angiosperm and Engler and Prandtl system of classification. Along with this system of classification, arrangement of classification, we will going to discuss the merits and demerits of systems of classification. हम लोग merits और demerits के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. यानी अगर Bentham and Hooker system of classification पढ़ते हैं या फिर Engler and Prandtl system of classification पढ़ते हैं, तो उनके हम लोग advantages उनके हम लोग एडवांटेजेस भी देखेंगे और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे. ठीक है? Next to the merits and demerits of the Bentham and Hooker system of classification, we will deal with the modern trends in the taxonomy. हम लोग modern trends देखेंगे taxonomy के. The modern trends of taxonomy, that is a cytotaxonomy, then phytochemistry and the taxometrics. Then come to the classification of angiosperm, that we have already discussed the evolution of classification in the previous lecture. ठीक है? इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने evolution of classification के बारे में पढ़ा था. ठीक है? और हम लोगों ने three basic types भी देखे थे. And we have again already started the artificial system of classification. हम लोगों ने artificial system of classification भी start किया था. ठीक है? We'll just take a look regarding this revision point of view of this topic. ठीक है? हम लोग थोड़ा revise कर लेते हैं because we have only one lecture in this particular week. So the evolution of classification in India, the botanical sciences had its origin in the very remote age with the development of agriculture, when Indians of Vedic period cultivated various food crops. ठीक है?
यानी बॉटनिकल साइंसेस जो है वो डेवलप होते गया, ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे बॉटनिकल साइंसेस ने भी खुद में भी डेवलपमेंट की अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेटेड ऑफ द वेरियस फूड क्रॉप्स। अलग अलग फूड क्रॉप्स कल्टीवेट करते गए और उस हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट करते गए बॉटनिकल साइंसेस में। Evidences suggest that our pre-literate ancestors knew some kind of categorization of plants based on their utility. यानी कुछ एविडेंसेस ऐसे बताते हैं कि हमारे जो प्री लिटरेट एंसेस्टर्स थे, यानी जो पढ़े लिखे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने प्लांट्स की कैटेगरीज करना शुरू कर दिया था, प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बेसिक कुछ कैटेगरीज की थी प्लांट्स की, जैसे कि ईडिएबल एंड नॉन ईडिएबल प्लांट्स, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस प्लांट्स, मेडिसिनल एंड नॉन मेडिसिनल प्लांट्स। Now here we are going to discuss that historical concepts of relationships, then Linnaeus artificial system of classification, then natural system of classification, and last one that is a molecular and a phylogenetic system of classification we are going to discuss. Now the historical development of plant classification has passed through the three distinct approaches. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है क्लासिफिकेशन की वो वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हियर कम्स विद द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे अभी। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, भले ही अगर हमारा ये स्लाइड हो गई है, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ये स्लाइड, ठीक है। So all of you should have to attentive in the classroom, सब लोग attentive रहेंगे, ठीक है। The artificial system of classification. This system of classification is more or less important because in this system plants are classified only on the basis of gross morphology, habit and their importance to the man, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इसको एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था। क्यों? बिकॉज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द प्लांट्स आर क्लासिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज लाइक द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई प्लांट अगर आपको दिखाई दिया तो उस प्लांट के आप लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी क्या बताओगे? उसके स्टेम के बारे में बताओगे, उसके लीव्स के बारे में बताओगे, उसके फ्लावर्स के बारे में, उस लीव का कलर कौन सा है, फ्लावर का कलर कौन सा है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। सो ऑल दिस कैरेक्टर्स यू विल डिस्कस इन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। सिर्फ बाहर बाहर से देख के ही उस प्लांट को हम क्लासीफाई अगर करते हैं या फिर ये लोग अगर क्लासीफाई करते हैं तो ये चला जाएगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सो द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर और लेस इंपॉर्टेंट, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इन दिस सिस्टम प्लांट्स आर क्लासिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, हैबिट एंड देयर इंपॉर्टेंस टू द मैन, ठीक है। Here comes again that is the artificial system of classification. It is based on the gross morphology, habit and their importance to the man. यानी ह्यूमन बीइंग को उससे कौन सा फायदा होता है या फिर उसका कौन सा इंपॉर्टेंस है, उसके बेसिस पे उन लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज बना दी, ठीक है। द मेन एडवोकेट्स ऑफ जैसे जैसे कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन, यानी ह्यूमन बीइंग को जैसे फायदा है अगर वो पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है, वो मेडिसिनल है कि नॉन मेडिसिनल है, वो ईडिएबल है कि नॉन ईडिएबल है। सो अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस और अकॉर्डिंग टू द value of that particular plant they classify the organism, and this is a part of artificial system of classification. The main advocates of the artificial system of classification, main advocates का मतलब यानी ये क्लासिफिकेशन जो था, ये क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने या फिर कौन से रिसर्चर्स ने दिया था।
The main advocates of this system of classification, we are the Theophrastus, which is popularly known as the father of botany. ठीक है, Theophrastus को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है कि जिन्होंने ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. उसके बाद में चरका, which is famous for the चरक संहिता. आप लोगों ने चरक संहिता के बारे में सुना होगा, which is devoted for the medicinal plants. ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए काम किया था चरका. आप लोगों ने अभी भी सुनते होंगे. आप लोग अगर कुछ होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर लेते होंगे तो वहाँ पे चरक संहिता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. So the main advocates of the artificial system of classification, that is the Theophrastus, which is popularly known as the father of botany. Then Charaka, then Carolus Linnaeus, again it is the famous name in the world of taxonomy, which is popularly known as the father of taxonomy. So these big names, they gives this artificial system of classification. ये बड़े-बड़े लोगों ने ये artificial system of classification दिया था. फिर भी ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है. ठीक है, because it does not give the convincing explanation related to the classification of angiosperms. There are so many drawbacks in this system. ठीक है, ये जो सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी ड्रॉबैक्स. इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं. ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज दैट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक जो आता है, the most important one is that plants closely resembling to each other are very often placed in the widely separated groups, while those that quite different are placed in a same group. देखो, सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर देखा जाए इसका, the most important drawback in this system of classification, that is the plants which are closely resembling to each other. जो plants सेम कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे, क्लोजली रिजेंबलिंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे, ठीक है, उन प्लांट्स को इन लोगों ने सेपरेटेड ग्रुप्स में डाल दिया, अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया. ठीक है, while those that quite different are placed in a same group. ठीक है, और ऐसे कुछ प्लांट्स की जो उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स डिफरेंट आते हैं. ठीक है, मैच नहीं करते. ठीक है, while those that quite different, यानी ऐसे प्लांट्स की जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स मेल नहीं खाते या फिर मैच नहीं होते, तो ऐसे प्लांट्स को इन लोगों ने अलग अलग ग्रुप में डाल दिया. इज इट राइट? इज इट, आई थिंक इज इट रॉन्ग? ठीक है, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम आ रहे हैं उनको सेम ग्रुप में डालना चाहिए. ठीक है, यानी क्लोजली रिलेटेड आ रहे कैरेक्टर्स उनको सेम ग्रुप में डालना चाहिए, और जिनके कैरेक्टर्स डिफरेंट आ रहे उन लोगों को अलग अलग ग्रुप में डालना चाहिए. ठीक है, तो इन्होंने उल्टा कर दिया. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, that the plants which are closely resembling to each other are very often placed in a widely separated group. ठीक है, जो प्लांट्स क्लोजली रिजेंबलिंग कैरेक्टर शो करते थे उनको सेपरेटेड ग्रुप में डाल दिया, अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, और जो प्लांट्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करते थे उन लोगों को इन्होंने सेम ग्रुप में डाल दिया. सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक of the artificial system of classification. Now here comes that is the part of the natural system of classification. अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं natural system of classification. तो natural system of classification क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बारे में अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. That what actually the natural system of classification. So the natural system of classification, which is popularly known as the Bentham and Hooker's system of classification of angiosperm. ठीक है, so the Bentham and Hooker, these are the two famous researchers and the famous scientists in the world of taxonomy. ठीक है, taxonomy world में इनका नाम चलता है Bentham and Hooker का. ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों का आपके अपने कॉलेज में नाम चलता होगा. ठीक है, कि ये स्टूडेंट है सेमेस्टर 3rd का, ये फिर ये स्टूडेंट है सेमेस्टर 5th का, या फिर गर्ल है कोई. ठीक है, सो उसी तरह इन द वर्ल्ड ऑफ taxonomy, that the two names of the dawn, that is the Bentham and Hooker's system of classification of angiosperm. So here come the personalities. The natural system of classification according to the Bentham and Hooker system of classification. ठीक है, natural system of classification दी थी दो साइंटिस्ट ने, that is the Bentham and Hooker system of classification.
Here the photographic image of the George Bentham, the famous scientist, having the time period 1800 to 1818 and 84. I think no one can exist. आप लोगों में से कोई भी नहीं होगा इस time period में 1800 and 1804. And here is the photographic image of the Joseph Dalton Hooker, having the time period 1817 to 1911. So come to the introduction related to the natural system of classification, which was proposed by the two famous scientists, that is Bentham and Hooker. So the artificial system of classification was found to be irrational. ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया artificial system of classification, so that artificial system of the first point, this is the first point of the natural system of classification. ये first point है natural system of classification. तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ये वर्ड कैसे आ गया artificial system of classification. तो इन्होंने जस्ट बताया है फर्स्ट पॉइंट में that artificial system of classification is found to be irrational. ठीक है, इन्हें वो कन्विंसिंग नहीं था. ठीक है, that artificial system of classification, it does not gives the convincing explanation related to the system of classification of the particularly angiosperm. ठीक है, an artificial system of classification ऐसा classification था कि उसने convincing explanation नहीं दिया था, यानी हमें जो convince कर पाए या फिर हमें जो specific information दे पाए classification से related, वो information artificial system of classification नहीं दे पा रहा था. ठीक है, comparative morphology is important to determine the relationship. ठीक है, यानी हाँ ठीक है कि कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी जो पॉइंट है ये कंपैरेटिवली स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो द मॉर्फोलॉजी इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट फॉर द कंपैरेटिव स्टडी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स के बीच में या फिर दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में या फिर सेम प्लांट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो डिटरमाइन करने के लिए कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. सिस्टम्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल अफिनिटीज इन प्लांट्स इज नोन एज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, यानी ये ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वर्क्स और इट रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल अफिनिटीज, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है. फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनेंगे सब लोग. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग. फॉर एग्जाम्पल, द नेचुरल अफिनिटीज लाइक द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी. यू कैन नोट डाउन द पॉइंट. आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेसिस पे काम करता है. जैसे कि हम लोगों ने बताया था, मैंने आपको बताया था कि दैट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन ओनली द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे ही बेस किया गया था. ठीक है, उस वजह से उसको ज्यादा कन्विंसिंग नहीं माना जाता. लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ठीक है, बेंथम एंड हुकर who gives the natural system of classification, it gives somewhat convincing explanation related to the classification of angiosperm. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, the natural system of classification of angiosperm, it is based on the reproductive structures. ठीक है, it is based on the characters of reproductive structures of that organism. यानी ये टेक्निकल कैरेक्टर्स में आ जाएगा फिर. ठीक है, जैसे अगर कोई प्लांट है तो उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पोलन ग्रेन्स, ओवरी, एंथर, स्टिग्मा, पेटल्स, सेपल्स. ठीक है, फ्लावर. All these characteristics are detailed studies in these
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू स्टडी करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, स्पेशली प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स को अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो ये तो एकदम एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगा। यही बताया इन लोगों ने यहाँ पे, द सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल अफिनिटीज। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था और एकदम परफेक्टली बताया था कि दैट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट बेस्ड ऑन द नेचुरल अफिनिटीज इन द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में जो नेचुरल अफिनिटीज है, फिर नेचुरल अरेंजमेंट की गई है, उस नेचुरल अरेंजमेंट के बेसिस पे ये प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करने वाले थे। ठीक है, जैसे कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर कहा मैंने यहाँ पे, जैसे कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवरी के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, तो ओवरी में हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे वहां पे कि कुछ प्लांट ऐसे होंगे कि उनमें ओवरी सुपेरियर होंगी, कुछ प्लांट ऐसे होंगे कि उनमें ओवरी इन्फेरियर होंगी, सुपेरियर ओवरी, इन्फेरियर ओवरी। ठीक है, सॉरी, कम टू द पॉइंट। सो दैट कुछ प्लांट ऐसे होंगे कि जिनकी ओवरी जो होंगी वो सुपेरियर होंगी, कुछ प्लांट ऐसे होंगे उनकी ओवरी इन्फेरियर होंगी। ओवरी सुपेरियर मतलब ओवरी ऊपर के साइड में रहेंगी। ठीक है, ओवरी इन्फेरियर मतलब ओवरी नीचे की साइड में रहेंगी। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन द पॉइंट, आप लोग ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, natural system of classification and a phylogenetic system of classification. Artificial system of classification में हम लोगों ने देखा कि that it is based on the morphological characters of organism. Simply it is on the gross morphology. Then natural system of classification, it is based on, you can note down that the natural system of classification is based on the characters of reproductive organs and structural morphology of organism. ठीक है, I think all of you are getting this. सब लोगों ने पॉइंट नोट डाउन किया होगा। So that natural system of classification is based on the characters of structure of reproductive organs and the structural morphology of plants. Means finally we can say that this natural system of classification, it is based on the taxonomic characters of the plants. आगे बढ़ते हम लोग। George Bentham and Joseph Dalton Hooker, two British botanists, published the one book which is named as the Genera Plantarum. ठीक है, now you can note down this point, आप लोग ये point note down कर सकते हैं। ठीक है, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर जो थे, ठीक है, so that George Bentham and Joseph Dalton Hooker, the two British botanists. Now you have to focus on this point. आप लोग इस पॉइंट पे फोकस कर सकते हो कि ये जो दो साइंटिस्ट है बेंथम एंड हुकर, दे बिलोंग्स टू द कंट्री ब्रिटेन, दैट इज इंग्लैंड। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो हमारे दो साइंटिस्ट आने वाले हैं, दैट इज एंगलर एंड प्रेंटल, दे आर अमेरिकन। ठीक है, सो द बिग ट्विस्ट इन दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे बिग ट्विस्ट है, ये इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि बेंथम एंड हुकर वाले एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम को नहीं फॉलो करते और एंगलर एंड प्रेंटल वाले बेंथम एंड हुकर को फॉलो नहीं करते। ठीक है, बेंथम एंड हुकर वाले एंगलर एंड प्रेंटल में कुछ खामियां ढूंढते हैं, एंगलर एंड प्रेंटल वाले बेंथम एंड हुकर में कुछ खामियां ढूंढते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स ढूंढते हैं, राइट। ठीक है, so it is the point which is related to that distinguishing characteristic between that both these two classification. ठीक है, somewhat. तो ये जो दो साइंटिस्ट है, जॉर्ज बेंथम हुकर एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, the two British botanists published one book which is named as the Genera Plantarum. ठीक है, I think all of you are getting my point. सब लोगों को पॉइंट समझ में आ रहे हैं। We are going to discuss the natural system of classification for some time. कीप ऑन योर वीडियोस, थोड़ी देर के लिए वीडियोस ऑन करो ताकि मुझे आप लोगों के रिस्पांस दिखाई दे कि आप लोग प्रॉपर्ली सुन रहे हो
या नहीं सुन रहे हो, ठीक है, मैं एक दो यहाँ पे सवाल पूछने वाला हूँ, तो चैट बॉक्स में आंसर नहीं करने हैं आप लोगों को, सिर्फ बैठे बैठे ही वहां पे रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे वीडियो ऑन नहीं कर रहा है। thank you for the response and that here comes the point, ठीक है। तो मुझे आप लोग बताओ, बैठे बैठे ही बताना है आप लोगों को वहां पे, व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारे टॉपिक का नाम क्या है, बैठे बैठे ही बताओ वहां पे। इट इज सिंपली अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नथिंग बट, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, राइट, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, किसने दिया था बताओ, राइट, ठीक है, दैट बेंथम एंड हुकर गिव्स अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, सो द बेंथम एंड हुकर दे गिव्स द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। So natural system of classification was given by, now you can switch off or your videos, आप लोगों को मेरी नजर अगर लग जाएंगी तो आप लोग बंद कर सकते हो वीडियोस आपके, ठीक है। So that come to the point that natural system of classification which was given by the two famous scientists, that is a Bentham and Hooker. I think सब लोगों को समझ में आ रहा है, हम लोग यहाँ पे natural system of classification discuss कर रहे हैं, ठीक है। The natural system of classification was given by the two famous scientists George Bentham and Joseph Dalton Hooker. These are the British botanists who published one book. उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। देखते हैं हम लोग यहाँ पे जेनेरा प्लांटेरम है क्या, तो जेनेरा प्लांटेरम नहीं है इनके हाथ में। एक बुक, एक फोटोग्राफिक इमेज थी मेरे पास कि जिसमें बेंथम एंड हुकर जो थे उनके पास में वो बुक थी जेनेरा प्लांटेरम। एनीवेज, so here comes to the points on our slide that we are going to discuss the natural system of classification which was given by the Bentham and Hooker. These are the two botanists, British botanists. They published their work, उन्होंने अपना वर्क जेनेरा प्लांटेरम नाम के एक बुक में पब्लिश किया था। They provided the natural system of classification in their book. इस बुक में उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। The names, description and classification of 200 families, 7,569 genera and near about 97,000 species have been given. एग्जैक्ट वैल्यूज दिए उन लोगों ने यहाँ पे कि इस बुक में उन लोगों ने कितने फैमिलीज, कितने जेनेराज और कितने स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। सो दे गिव्स द नेम्स, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन। देखो उन्होंने नाम भी दिए थे, साइंटिफिक नाम दिए थे, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स, दे गिव्स साइंटिफिक नेम्स as well as the vernacular and local names also. Then description related to these plants, especially the angiosperms, and classification, उन्होंने classify भी किया था कितने families को, 200 families, ठीक है, 200 families कम नहीं होती है, ठीक है, हमें तो just 10-12 ही families पता होती है, ठीक है। So 200 families, they give the description related to the 200 families. There are about 7,000 genera and near about 97,000 species, near about 1 lakh, ठीक है, 1 lakh species के बारे में इन लोगों ने यहाँ पे ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। Then larger genera subdivided into the subgenera and the sections. जो लार्जर जेनेरा थे या फिर लार्जर जीनस जो थे, ठीक है, बड़े वाले जो जीनस थे, उन जीनस को इन लोगों ने सब डिवाइड कर दिया था, सब डिवाइडेड इनटू द सब जेनेरा, ठीक है। दिस इज द टैक्सोनॉमिक रैंक, ठीक है, ये टैक्सोनॉमिक रैंक है, दैट इज द जेनेरा और द जीनस।
So the larger genera, it is subdivided into the subgenera and the sections. They use the term order for the family. ठीक है, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था ऑर्डर. ऑर्डर जो वर्ड यूज किया उन लोगों ने फैमिली के लिए यूज किया था. ठीक है, ये सभी पॉइंट हमें आएंगे वहां पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में. तो उन्होंने ऑर्डर्स को यूज किया था फैमिली की जगह पे. ठीक है, ये मेरिट्स भी हो सकता है या फिर डीमेरिट भी हो सकता है, तो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वहां पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में. So the scientists Bentham and Hooker, they use the term order for family, and they use the word cohort for the order. ठीक है, cohort और order में कंफ्यूज नहीं होना है. cohort is nothing but the order. तो cohort को उन लोगों ने cohort वर्ड यूज किया था इंस्टेड ऑफ द ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर की जगह पे. सो आई थिंक टाइम इज गोइंग ऑन. ठीक है, खत्म होते आ रहा है हमारा टाइम. सो आई थिंक बाकी का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू डू वन थिंग. यू हैव टू गो इन योर चैट बॉक्स. सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स में जाएंगे एंड राइट देयर योर नेम एंड वन वर्ड दैट इज प्रेजेंट. सब लोगों ने अपने चैट बॉक्स में जाना है और वहां पे जाके अपना नाम और साथ में एक वर्ड लिखना है प्रेजेंट. इट इज अ पार्ट ऑफ योर अटेंडेंस. जस्ट अ मिनट. हाँ, सब लोग लिखेंगे. राइट डाउन योर नेम एंड वन वर्ड दैट इज प्रेजेंट. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर डन योर प्रेजेंटी. सब लोगों ने अपनी प्रेजेंटी सेंड कर दी है यहाँ पे. सो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. आज के लिए बस इतना ही. बाकी का टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए सब लोगों को स्टे होम, स्टे सेफ.